सो है एवरीवन, दिस इज़ भूषण एंड वेलकम टू द माय चैनल। एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट वेक्टर्स एंड सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर एडिशंस के बारे में। सो आप लोग देखिए इस वीडियोस को, कंप्लीट वीडियो को देखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर्स के बारे में हम इसमें देखेंगे आज, यूनिट वेक्टर, ठीक है, राइट। पहले भी यूनिट वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। क्या होता है यूनिट वेक्टर्स, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है और इसका फार्मूला होता है ए, ठीक। इस तरह से हम लोग लिखते हैं यूनिट वेक्टर को, ठीक है। ए पर कैप डाल दिया तो मतलब यूनिट वेक्टर लिखा गया है और इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड्स, राइट। दिस इज द फार्मूला ऑफ द यूनिट वेक्टर, ओके। तो चलिए एक क्वेश्चंस करते हैं जरा इस पर, बहुत सिंपल सी था। इफ़ ए वेक्टर is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, right? Then find the unit vector. Find the unit vector, right? इसको कैसे निकालते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर? तो सिंपल सी बात है, यूनिट वेक्टर हमको एक कैप निकालना है तो इस फॉर्मूला की यूज़ करेंगे। क्या होता है? वेक्टर ए डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड्स, राइट, ओके। So you will get unit vector, vector A is written as 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, right, divided by its magnitudes. So what is the magnitude of this A vectors? How can we calculate the magnitudes? Magnitudes can be calculated by the you have to what? You have to be applied 2 bars, means that it is the magnitude of the vector. So how can we calculate the magnitude of the vector? The magnitude of the vector can be calculated as, you can do the 2k square 4, 3k square 9 plus 4k square 16, okay. What will you get? 25 and 29, okay. So this is the unit magnitude of the vector A. The unit of vector A is written as its magnitude is written as what? Root under 79, right? This is what? This is the यूनिट वेक्टर, ओके। तो यूनिट वेक्टर ये है। चलिए इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट आई हैव टू डिस्कस अबाउट द सबट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स, ओके। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, right? So suppose a vector A is here is A vector and B vectors, right? And angle between the vector A and B is theta. Theta is what? Theta is the angle between vector A and B, right? So when you have to calculate the resultant of the vector, what will you do? You apply the parallelogram of vector additions, and parallelogram law of vector additions state that if two vectors represent the sides of parallelogram, then the diagonal of the vectors will give the resultant of the vector. So this will give the resultant of the vector A plus vector B, right? Okay. So this is the vector A plus B and resultant is here. But when you calculate the suppose vector A minus vector B, subtraction of vector means what? Vector A minus vector B is written as vector A plus minus of vector B, right? A minus B is written as what? Vector A plus minus of vector B. It means that subtraction of vector is nothing that the only addition of the vector A with the minus of the vector B, okay, okay। देखिए तो ए वेक्टर है, बी का वेक्टर अगर इसका माइनस लेंगे तो वेक्टर बी है, बी का नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो? इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये वेक्टर बी हो गया, माइनस वेक्टर बी। समझ गए कि नहीं? ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर ए है और ये क्या होगा? माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो अगर इसका रिजल्टेंट की आप बात करोगे तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे पास करेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज द वेक्टर आर और क्या हो जाएगा? ए माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट बता रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए माइनस बी
And what is suppose this is the angle between the vector a and b. So what is the angle between a and b? What is the angle between vector a minus vector b? This is the angle between the vector a and b. The what is the angle between vector a or minus of vector b? The angle between the vector a and vector minus b is pi minus theta, right? You know that this angle is theta. What will be this angle? This will be the phi minus theta, right? So when you calculate the resultant of the vector a minus b, this is what? This is vector a minus vector b. So when you calculate the resultant of vector a minus vector b, then you will see, you will apply the vector a square vector b square plus 2 times ab or a minus b. What is the angle between a minus b? The angle between the vector a minus vector b is what? Pi minus theta. So you will write pi minus theta is the angle between vector a or minus of vector b, and you are going to get what? As you know, cos pi minus theta is the minus of cos theta. I hope you might have studied in the trigonometric. So this is the a square plus b square. Cos pi minus theta is what? Minus cos theta. This is the 2ab cos theta. Okay, so vector a or vector b, sorry, vector a minus of vector b, the resultant is a square plus b square minus of 2ab cos theta, right? This is the subtraction of the vector. Okay, मिटा दे, कितना मिनट का हुआ? ओके, तो अगर दो वेक्टर a माइनस बी है, ठीक है, a माइनस बी, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है? इसका रिजल्टेंट होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2b cos थीटा, राइट? तो दिस इज द फार्मूला ऑफ द वेक्टर a माइनस बी। ओके, चलिए इस पर क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर? सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। जैसे एक वेक्टर a है, ठीक है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड दिया है 3 यूनिट्स, ठीक है, 3 यूनिट्स। वेक्टर b का मैग्नीट्यूड दिया है 4 यूनिट्स, राइट? ओके, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड b इज 60 डिग्री। फाइंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड्स निकाल दो आप। वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड्स आप निकालोगे तो क्या होगा? इसका अगर आप निकालोगे तो होगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो यू विल गेट a square, what is the magnitudes of the a? 3 units, and square of 3 is what? 9, and what is the magnitude of the b? 4 units. The square of b is 16 minus of 2a, or you put the value of a is 3 units, okay, or what is the value of b? B is 4 unit cos theta, right? So you are going to get, when you add this 16 plus 9, it is 25 minus 4 3 is 12, 12 2 is 24, 24 cos cos 60, theta is the 60, the cos 60, right? I hope you people are getting this. So this is 25 minus 24, and cos 60 is 1 by 2. You know the value of cos 60, 1 by 2. This is what? This is 12. And what will you get? When you subtract the 12 from 25, you will get 13. Okay, we are right? 13. So this is the 13. This is the required answer for questions. This is very easy questions. So okay, and suppose a question is given as vector a, magnitude of vector a minus of magnitude of vector v is equals to the magnitudes of the vector a plus b. Vector a plus b का magnitudes is equals to the vector a minus b. Then find the angle between the, then find the angle between vector a and b. Okay, so how can you solve these questions? Just you apply the formula of the magnitudes here and here. Okay,
तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द वेक्टर ए माइनस बी का वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए माइनस बी. तो दिस यू कैन रिटन एज you can write as a square plus b square minus of 2ab cos theta, or theta is the angle between the a or vector b, and here you can also write as a square plus b square plus 2 times ab cos theta, right? Okay, so this root cancel out, okay, and you will get a square plus b square minus of 2ab cos theta is equals to a square plus b square plus 2 times ab cos theta, right? And a square is cancel out, b square cancel out. Okay, so what will you do? Just you can solve it. 2ab cos theta minus of what? 2ab cos theta, right? This is will be what? 0. So this will becomes the 4 times ab cos theta is equal to 0, right? And cos theta is equal to what? 0. Cos theta is equal to what? 0. Then theta is what? 90 degree, right? Cos theta का वैल्यू कितना हो गया? 0. Then theta is what? 90 degree. This is okay. Okay, so here is your next question. Suppose a boy is running in a circular path. ठीक है, cyclist is running in a circular path, okay, with constant velocities v, ठीक है. Then find constant speeds. Velocity cannot be constant in the circular motion, because velocity is what? Vector quantity. As you know that if directions or magnitude will be changed in the vector will be changed, right? So constant speed v, then find the change in velocities, find the change in velocities if cyclist describes 30-degree angle, right? Okay, so this is your questions, and try to solve it by its own. Okay, so I am going to erase this. Okay, so this is your questions. Cyclist is running. Suppose a cyclist is running from here. This is the velocity v1 at that point, right? And when the cyclist come here, it makes angle 30 degree, right? Theta is what? 30 degree. It makes angle 30 degree, and its velocity becomes v2. Okay, so what is the change in velocity? Change in velocity means what? v2 minus v1, magnitude of the change in velocity. You have to find it, right? So how can you solve it? You have to find the change in velocity. Change in velocity means what? v2 minus v1. So you can solve this by v1 square plus v2 का square, ठीक है, minus 2 times v1 v2, right, cos theta, ठीक है. So what is the theta between the vector a and b? You have to calculate the theta between the velocity v1 and v2. So what will you do? Just produce forward this line, right? ठीक है. तो क्या करना है आपको? इस लाइन को क्या करना है? तो पीछे खींच दो आप, या आप ऐसे नहीं कर सकते. इस एंगल को यहाँ पर वेक्टर को बना दो, यहाँ पर इसको v1. पता ना कि आप वेक्टर को क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं. आप वेक्टर को क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं. अब v2 है, यहाँ पे v1 है, तो इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ पे, मतलब हमको यही एंगल पता करना है, ये एंगल. तो व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द, क्या होगा एंगल? इसको बताओ आप, एंगल क्या होगा? तो देखो ना, ये लाइन परपेंडिकुलर इसको खींचोगे आप, तो ये 90 डिग्री होगा. ये 30 डिग्री कितना हो गया? 60. कितना होगा? 60. दिख रही चीज़ें आपको? नहीं दिख रहा है? ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री. समझ पा रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक 60. तो ये एंगल कितना हो जाएगा? क्योंकि तो क्या है, ये 90 है, होगा ना. दिस इज 90. तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60. तो ये कितना?
60 हो जाएगा, राइट। सॉरी ये कितना 90 30 60 था, तो ये कितना हो जाएगा, ये फिर 30 हो जाएगा। सॉरी 60 था तो ये कितना एंगल 30 हो जाएगा, तो ये एंगल 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। तो वेक्टर ए और बी के बीच का कितना एंगल हो गया 30। तो अब कैलकुलेट करोगे आप v1 स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर करोगे -2 टाइम्स v1 v2 कॉस कितना लिखोगे आप, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, राइट। आप ये लिखोगे। अच्छा v1 v2 ये वेलोसिटी है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में बोला था हमेशा कांस्टेंट है v। वेलोसिटी का मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वेलोसिटी का वह स्पीड होता है, और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है कितना v से। तो यहाँ पर v1 v2 चेंज इसलिए हम लिखे हैं v1 v2 क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो वेलोसिटी से डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो v1 का स्क्वायर, v1 के जगह पर v रखोगे, v2 के जगह पर क्या रखोगे, v रखोगे, -2 1 v1 v2 क्या सेम है, राइट। यहाँ पे रखोगे तो v स्क्वायर हो जाएगा, होगा, और कॉस कितना, कॉस 30 यानी सॉरी √3/2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कट गया, कितना हो जाएगा बताओ, तो यहाँ पे हो जाने वाला है 2 टाइम्स v स्क्वायर माइनस ऑफ v स्क्वायर √3, राइट। तो यहाँ पे अब v स्क्वायर जब बाहर निकालोगे तो क्या होगा बोलो, सॉरी यहाँ पे v स्क्वायर कम लोगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, ओके। तो v बाहर निकल गया तो आपका आंसर आ जाएगा v √2 माइनस √3 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। ओके, सो कितने वीडियो रहने तो ठीक है, रहने तो चलो करो जाओ, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब हमको देखना है यहाँ पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, ठीक है। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समझे क्या होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, ठीक है। इफ n sides of polygon, n side represent if n vector represent the side of polygon, side of what, polygon, side of polygon, ठीक है। सपोज वेक्टर ए है, ठीक है, एक वेक्टर बी है, इस तरह से वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इस तरह से वेक्टर डी, राइट। तो इस तरह से बहुत सारा एन साइड है और एक पॉलीगन बनता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, देन यहाँ पे इसका रिजल्टेंट अगर वेक्टर ए है, वेक्टर बी इधर जा रहा है, वेक्टर ए था, वेक्टर सी इधर कुछ गया, राइट, और वेक्टर डी इधर कुछ जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से अगर एन वेक्टर साइड्स पॉलीगन के साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, तो एक ऐसा वेक्टर जो अपोजिट ऑर्डर में लेंगे, अपोजिट ऑर्डर समझ पा रहे हो कि पहले एक वेक्टर इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, फिर इधर जा रहा था, है ना, सब इधर जा रहा था, लेकिन एक ऐसा वेक्टर जो अपोजिट ऑर्डर में लेंगे वही बताएगा इसका रिजल्टेंट। तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा ना, ई वेक्टर जो हो जाएगा वह रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर हो जाएगा ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, राइट, आपको दिख रही है वेक्टर डी, ओके। तो ई वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और वेक्टर डी। तो वही कही इफ एन वेक्टर रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ पॉलीगन, अगर साइड्स ऑफ पॉलीगन को रिप्रेजेंट करता है तो अ वेक्टर विच इज टेकन एज अपोजिट ऑर्डर विल बी रिप्रेजेंट द व्हाट, will be give the resultant of this all vector, okay। So how this formula come, how this formula come, चलो तो यहाँ पे देखते हैं कैसे होता है। जैसे यहाँ पे एक वेक्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉ कर दिए, समझ गए। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एक दो ऐसा वेक्टर और थर्ड ऐसा वेक्टर जो अपोजिट ऑर्डर में ले, तो क्या ये दोनों वेक्टर के रिजल्ट को ये वेक्टर डिपेंड बताएगा। तो इस वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बता रहा है ये लाइन, राइट। और फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से डायगोनल, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पर एक ट्रायंगल जा रहा था, फिर यहाँ से एक ट्रायंगल इधर से गया, तो ई क्या बताएगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर के रिजल्टेंट को। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, राइट, समझे। और ये देखो यहाँ से एक ट्रायंगल, फिर यहाँ से ट्रायंगल, तो ये अपोजिट ऑर्डर में ले रहा है, तो ई वेक्टर क्या बताएगा, ई वेक्टर बताएगा इस वेक्टर और इस वेक्टर के रिजल्टेंट को। तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस वेक्टर, राइट। दिस इज द व्हाट, दिस इज द पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप कि यू पीपल get this and enjoy these sessions. So thanks for watching my video.
Okay, goodbye, good night.